Hello, Sunny. How are you doing? Welcome to Financial Express. Thank you so much, Ishita. I'm doing very well. What should I call you, Sunny or Sandeep Bhaiya? Whatever you like. Tell me something. How are you absorbing the love and appreciation? Not just your fans, but even actors are posting for you. And to get a spin-off, it's a big thing. I mean, it's a character has been picked, and you got your own series. How does it feel? I think people only dream of something like this, and it's something which happens. I don't know. Probably it never happens, or probably once in a lifetime. So I feel honored. I feel grateful. I feel happy and blessed that it has happened with me. And yeah, I mean, this probably tells me that okay, I was on the right path, and maybe I'm going in the right direction. Yeah. And there is a universal force or divine energy which is supporting me. So I just want to go along with this and make the best out of it and keep growing and doing better each day. It's your hard work also. I'll add that. So yes. What was that moment जब आपने decide किया चलो मुझे I want to be an actor. This is what I want to do, and I'll be giving my best. Like I'll not give up. What was that moment in life? See, I've learned from my dad that अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो ना तो it's no big deal. और ऑलरेडी किसी ने अगर किया हुआ है तो ऑल द मोर इट्स नॉट अ बिग डील. कुछ आप चीज़ वो हासिल करना चाह रहे हैं जो किसी ने नहीं किया है, उसमें फिर भी आप सोचोगे, पर अगर आपका बिलीफ, आपका फेथ और आपका ट्रस्ट और आपका डेडिकेशन है ना तो आप डेफिनेटली वो अचीव कर सकते हो. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय डैड. हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड बीइंग एट इट विदाउट एनी अटैचमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस. So this is what I've learned. And so 7th में ये सोचा था. Standard 7. जी. Okay. कि एक्टर बनना है. Too early. Like उस टाइम पे I don't know लोग सोचते भी नहीं है. Okay. वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं probably खुशनसीब हूँ या फिर कई लोगों को पता भी नहीं होता उनको लाइफ में क्या करना है. And they realize very late and probably they're able to follow that or not. It's to each one, सबका अपना अपना है. But I am very, very grateful that I knew that I want to do this at such an early stage in my life, and so happy and thankful that I'm able to do it. And I'm sure I know there has been a roller coaster ride before that, but it's all worth it. Part of journey. Yes. But your parents were supportive when you told them, now this is what I want to do. UPSC नहीं करना है. I want to be an actor. What was their reaction like? My dad wanted to be an actor. And I got to know this very late when I told him for the first time. And he couldn't go because of the financial situations at home. He was, he got a letter from FTI also for admission and interview and everything. He was such a flamboyant and, like in his school, in his college, larger than life, and he was the president of his college. Or दंगे हो सकते थे उनकी आवाज़ पे. He was of that stature in his college days, and he was very much inclined into film acting, but he couldn't do, and he couldn't go, so to say. And I'm sure if he would have gone, maybe I would have been a star. Who knows? He still can, probably. He still can. So yeah. He still can, but now he's going with the flow. Okay. And thankfully, I think God has made me ready to be able to fulfill his dreams. Yes. And he sees all these things through through I am able to do this, all this. क्या बोलते हैं उनका सपना मैं पूरा कर रहा हूँ basically. Right. Yeah. I'm sure he must be really proud. Yeah, he is. Sunny, how, because you started and standard 7 से I'm sure आपके कुछ references होंगे. These are the actors I like. I want to understand, आपने सिनेमा को चेंज होते देखा. How do you see that happening? What's your take on it? When I started acting, right, I always knew I want to be such an actor. जैसे मैं आपसे कैसे रियल लाइफ में बात कर रहा हूँ. अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके साथ, या अगर आप इंटरव्यू ले रही है मेरी, तो आप किस तरीके से बात करेंगी. आई वांट टू पोर्ट्रे दैट as much natural as possible. So that's what I have learned, and I try to, and by default within me एक ऑब्जर्वेशन वाली आँख चलती रहती है. मैं लोगों को देखता रहता हूँ, वो फिट इन होता रहता है. तो मैं जो भी करता हूँ वो लोगों से सीखता हूँ,
लोगों में देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको समझता हूँ, उनके तकलीफ़ें समझता हूँ, उनके एस्पिरेशन समझता हूँ, एंड ऑल दिस adds up to help me build a character. Okay, because you're talking about it, I want to tell you, you are one such actor जिनको शायद words की ज़रूरत नहीं है, आप emotions, I say emotions से सब कुछ बोल देते हो. There's this scene in Aspirant जहाँ पे आपका नहीं हो पाता है, Naveen and you are in the frame, everybody is moving, the camera is on you and him, and you are not saying anything. It's so beautiful, such a beautiful scene to watch. I mean, how do you do that? Does it come like naturally to you, or you have to prepare for it? What is it like? I think I'll have to not take the entire credit by myself. It's the teamwork. It's it's the music, it's the editing, it's the camera, and of course direction, and of course my bit. It was that feeling, you know, that अब सब खत्म हो गया जिंदगी. Exactly, and we could feel that. अब कुछ रह ही नहीं गया लाइफ में, मतलब जिसके लिए इतने साल दे दिए, जिंदगी झोंक दी. It's all over. So it was that feeling which I thought of, and I tried to portray that to the best of my abilities, and I guess it was captured well. It has come out so beautifully. So yes, tell me something. Every actor has a method. Some says हम script पढ़ के या director से सुन के कर लेते हैं. Some says हम कमरे में बंद करते हैं खुद को. What is your process like? How do you prepare for a character like say Shehzada or say Sandeep Bhaiya? Emotions. So I don't have a particular way or method, so to say, but मुझे ऐसा लगता है कि script is my Bible. Okay. और मैं वो पढ़ता रहता हूँ. वो मुझे स्क्रिप्ट बताती है कि क्या तैयारी करनी है, Okay. कितना पूछना है, कितना क्या करना है, एंड ऑफ कोर्स इन टैंडम विद द डायरेक्टर एंड द राइटर, कीपिंग द विजन इंटैक्ट, एंड आई सी what all possibility. I also don't do it. It happens. I just keep reading. Natural actor. And things come, and then you feel, पता नहीं वो क्या होता है, you feel कि अगर ALC की तैयारी करनी, ALC बना हूँ मैं, and I will have to go and meet and understand how they work, how their offices are, at what level they operate. और अगर कुछ मजदूरों के साथ सीन्स हैं तो उनके क्या टेक है, so always your character is built by not just you, Yes. by what other people think about you. Nice. So when I read the script ना, in that it आपके scenes में तो आपका दिखता है, लेकिन आपके बारे में बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं वहाँ से पता चलता है Right. कि तुम्हारा क्या character है. So that, and then I went and met the laborers. I asked them, what do you think of ALC officers? Are they really beneficial, or are they working for you or not, and such things. So I do all that if I feel, and if I am able to do that. You know, कई बार आप सोचते तो हो, करना बहुत कुछ चाहते हो, पर आपके पास फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी या वो साधन नहीं रहता है. जब जितना जो हो पाया मैं वो उतना करता हूँ. बट नाउ इफ गॉड इज प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटीज, आई प्रॉब्ली गो ऑल आउट एंड to do the best possible stuff for any character and go to any lengths or any depths to portray it very, very realistically, naturalistically, and with full conviction. Tell me something. हर इंसान इंडस्ट्री में आता है. I was talking to Pankaj Tripathi. He was also like, मैं इंडस्ट्री में लीड बनने ही आया था. So what is your take? संदीप भैया के बाद are you going to become choosy कि अच्छा मुझे यही particular roles करना है, or you feel character important है then you'll do it irrespective वो lead है या नहीं है? What is your take? So my take is कि पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, पर ये ज़रूर होता है कि I mostly don't try to choose a script. Okay. A script chooses me. That's what I feel, because वो लोगों की मोहब्बत अगर होती है और वो प्यार होता है, फिर वो उनका पैशन होता है, फिर स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट भी अच्छी रहना उतना ही ज़रूरी है. फिर वो ये हो जाता है कि आई लव देम सो मच, और उनका प्यार इतना ज़्यादा है कि मैं फिर वो कर लेता हूँ. सो इट्स वेरी वेरी ऑर्गेनिक. तो वो लिखा होता है. हमको दुनिया में लगता है हम बड़ा चूज कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है. अमूमन चीज़ें आपको चूज करती हैं, पर हम बड़ा वो बता देते हैं कि मैंने ये चूज किया. आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो. आई थिंक आपको तो बहना चाहिए बस. आपको रुक नहीं जाना चाहिए बस किसी पत्थर के पीछे.
हमारा काम है बहना, और वो नदी और रास्ता खुद ही अपना वो मंजर बना देता है, और आप बस चलते चलते हो. So that's what I want to do. I don't want to obstruct any flow and just be with the flow. You put it so beautifully. Tell me something. It's your job and you're doing it beautifully, brilliantly. But I want to understand how easy or difficult is it for you to switch on and switch off between characters? If it's like Sandeep Bhaiya, the characters is going through its own emotional roller coaster ride, or be it Shehzada, which was you were playing a villain, beautiful villain. So yeah, how Well, easy or it difficult is not easy. I mean, if you have to display or portray a character, you take time to understand. For example, वो 30-32 साल का है, so what all has transpired in his life in these 30 years, what is his background, what are his aspirations, does he have any regrets, how are his parents like, how has his childhood been, how does he have a brother or sister, is he insecure in life, so many factors makes a character and more. But and then uska language, so many things. So you take that time to prepare a character, and then I can't suddenly jump into another one. I try my level best कि भगवान मेरे को एक एक ही करवाओ एक एक टाइम पे. So I try to do that. But if I don't have a choice, then I pray कि ऐसे मत करवाना कि दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं. I can't do that. Okay. I mean, it's not easy. But एक में घुस के कर रहे हो और बस वो खत्म होने वाला है, प्रॉब्लली फिर वो दूसरे का कहीं से कुछ बीच का आ रहा है. किया है मैंने ऐसे भी, बट आई डोंट एंजॉय दैट. आई वांट टू बी फुल्ली विद वन कैरेक्टर, कंप्लीट इट नाइसली, होलसमली, एंड देन मूव ऑन. समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू आल्सो लर्न एंड upgrade yourself and try and do the best. I think you're doing it brilliantly. Whatever I've seen. Thank you. I'll read this, okay? Inside Edge aspirants, चाचा विधायक हैं हमारे, संदीप भैया नाउ, भौकाल, The Family Man, मर्दानी, Thai Massage, शहजादा. You've given us some beautiful characters, Even if I say the film was okay, but your character has stood out always. Thank you so much. I genuinely believe that. I want to understand, how do you look back at your journey? Was there a time when people told you, तुमसे नहीं होगा, वापस जाओ, or some mean things, and how did you keep yourself going? What motivated you? But frankly speaking, when I had been auditioning, जो मेरे auditions लेते थे, वो लोग चाहते थे कि इसको मिले ये रोल. आप FTI से हो, so of नहीं, course नहीं, that comes. other than that also, I used to talk to them, I used to interact with them. हम लोग तैयारी करते थे अच्छे से, ऑडिशन देते थे और बड़े प्यार से देते थे. तो वो जितने भी जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, आई यूज्ड टू गेट कॉल बैक बिकॉज ऑफ अ गुड ऑडिशन. सो मेरा काम उतना ही होता था, एंड दे यूज्ड टू विश कि इसका क्यों नहीं हो रहा है, इसका होना चाहिए वही वाला संदीप भैया. हर किसी और किसी का निकले ना निकले, इसका तो निकल, ये रहा है. एंड इट्स द प्योर लव ऑफ पीपल. एंड व्हेन आई यूज्ड टू ऑडिशन आल्सो ना, आई वुड नेवर यूज्ड टू गो लाइक चलो एक ऑडिशन दे के आते हैं फटफट और रोल ले लेंगे. नो, फॉर मी दैट ऑडिशन यूज्ड टू, दैट इज माय ओनली चांस. They used to tell me आजा परसों आजा. मैंने कहा प्लीज मुझे थोड़ा से 3-4 दिन दे दे प्लीज, बिकॉज आई वांट टू प्रिपेयर एंड गिव माय बेस्ट. एंड दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड दे यूज्ड टू डू दैट. और मैं तैयार करके आता था जैसे मेरा शूट हो रहा है वो, बिकॉज ओनली देन they will like it or I will stand out. Probably I am not looking the part, but probably something I have done or something I have improvised which probably grabs their attention and they say कि try करते हैं इसको. So I used to go with that thought. And I used to think कि यही मेरी opportunity है, ये मेरी फिल्म है अभी, ये मेरा वो है. एंड वो ऑडिशन हर कोई, मुझे सारे दोस्त बने हुए थे कितने सारे कास्टिंग वाले, वो मुझे बोलते थे कि अच्छा ऑडिशन देना ताकि वो हर जगह घूमता है, कहीं भी खराब छपना नहीं चाहिए. That's how I used to think, and I used to my best of the abilities give my 100%. और and I think वो consistently वो करते करते उसी से ही चीज़ें बनी हैं धीरे धीरे. So do you remember your first day in Mumbai जब आप
पहली बार बॉम्बे आए FTI से कि अच्छा अभी आई हैव अ डिग्री, आई हैव वर्कड ऑन माई स्किल्स, नाउ आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड? डू यू रिमेंबर दैट डे? यस, आई रिमेंबर. और आई ऑल्सो रिमेंबर कि हम लोग टेम्पो में, हम 4-5 दोस्त FTI के बैचमेट्स आए थे, और हमें लगा था चलो आ गए बम्बई. अब ऐसा नहीं लगा था कि अभी कहाँ जद्दोजहद में घुस रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. बिकॉज वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे साथ जो लोग थे ना, उनकी वजह से मैं तैर गया और बच गया और संभल गया, और सैनिटी रही, और अच्छे खासे सोबत में रहा. तो ये इन लोगों की वजह से थोड़ा जो समय जो है काफ़ी स्मूथ हो गया, वरना मुश्किल हो सकता था डेफिनेटली. और रही भी है एट अपने अपने लेवल पे. ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसपास बहुत बढ़िया है, बट स्टिल यू फील राइट एट द एंड ऑफ द डे कि बात नहीं बन रही है, तो वो होता है. बट and as I say that was a graduation phase, right. You know, तो वो ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएट हो रहे हो, तो वो आएंगी चीज़ें, सीखोगे, करना पड़ेगा, नए तरीके से उसको फेस करना पड़ेगा, उससे डील करना पड़ेगा. संदीप भैया के जैसे आपने प्लान भी नहीं रखा था लाइफ में, यू जस्ट हैड वन प्लान एंड यू वर लाइक यही अब है. हाँ, मतलब मैं तो वही सोच के आया था कि अब यही है, यही करना है अब. You know, इंडस्ट्री में हमेशा बोलते द एक्टर हैज अराइव्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट डज इट मीन एंड डू यू थिंक यू हैव गॉट योर ड्यूज? मुझे पहले तो इस बात का मीनिंग नहीं पता. एग्जैक्ट. एक्टर अराइव्ड मतलब बॉम्बे कब आया, ऐसा? he has arrived, he is now, you know, there. देखो, ऐसा सोचेंगे ना तो फिर ग्रोथ खत्म हो जाएगी, सीरियसली. एंड आई डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट दैट. आई मीन, I don't want that thought also to cross my mind, but because बहुत सीखना है लाइफ में, बहुत ज़्यादा. और and I want that to be open. I want to be open to learn. I pray to God कि मुझे हमेशा सीखने के लिए तैयार रखिएगा हर स्थिति में, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो कुछ भी हो. And genuinely speaking, I don't read that much newspaper और वो सब चीज़ें हो गई. But how I learn things and understand things is through my roles. When I am playing Sandeep Bhaiya, I learned about labor department. Right. I learned what their job is. I learned how they are serving people. I learned how they have courts there. I learned how so many laborers, so many lives are dependent on labor department. I did not know about all this. So that's how I learn. And I want to learn, you know, with each character. And I want to grow each day with each character. And I want to, the person whom I want to compare myself is my yesterday and nobody else. Wow. Nice. So that's how I want to operate. And the day I feel कि मैं कल से बेहतर नहीं हूँ, that is the day I will feel कि नहीं यार गलत हो रहा है. And I have told my people, कभी कुछ ऐसा लगे तो झापड़ मार देना भाई, है ना? और वो लोग हैं भी ऐसे, वो होने नहीं देंगे. You need such people in your life, yes. Yeah, so that's But let me tell you, when I look at your filmography or the films or series you've been a part of, one thing I can say, whatever you're choosing is working for you. So much so that I can say maybe 10 years whatever later. I am chosen for. Yes, let me put it that way. Whatever the script is choosing you for or the directors are looking at, I think 10 years later, the generation will still watch it with same enthusiasm, and you know that's the legacy. That's you know, so sweet of you. That's what I have seen, and I'm looking forward that you or the script chooses you that way. Yeah, you genuinely. can say whatever. I'm just yes. Yeah. I want to ask what's next, और क्या सनी हिंदुजा से हमें मिल रहा है? Aspirant 2 is the next project, and also there is Railwaymen, which is by Yashraj Films, the web series. So these two are on cards, and let's see two more so things. You can reveal something about your character. Aspirant 2 में मेरा रोल है संदीप भैया का. वो तो मुझे पता है. वो संदीप भैया अब इतने फेमस हैं कि whenever I told my someone at work I'm interviewing Sunny Hinduja, like Sandeep Bhaiya. So that's how it is. Very sweet. हाँ, फिलहाल तो यही है. Okay, I have a segment. जब आप UPSC की अब इतना आपने किया है तो आपने कुछ तो पढ़ाई करी होगी. So I have like very easy 5 questions. Okay. So and these are questions from UPSC paper. Okay. मैंने मेंस वाकई क्लियर नहीं किया है. वाकई नहीं पहुंचा हूँ मेंस में. इसीलिए मैंने सबसे easiest questions उठाए हैं. No problem. ठीक है. Let's try.
Which country, which is called God's own country? Which place in India? God's own country. God's own country, Kashmir. Yeah. Country, God's own city, God's own country. Kashmir, right? Kerala. Kerala. Yes, Okay, yes, okay, yes. okay. Okay. Which Indian monument was constructed entirely from white marble and is often referred to as teardrop on the cheek of time? White marble. Taj Mahal. Yes. Okay. Good one. Good one. Which Indian scientist is known as the missile man of India? APJ Abdul Kalam. Nice. Clear हो सकता है आपका. Which Indian sports person is often called Sachin Tendulkar of badminton? Sachin Tendulkar of Badminton. Laksh. Sachin Tendulkar of badminton. Yes. बैडमिंटन प्लेयर है ना. हाँ जी. एक तो लक्ष्य पता है मुझे. Female player. अच्छा पीवी सिंधु. Yes. Oh, yeah. हो गया क्लियर. मैं बोल रही हूँ आपका मतलब. ऐसा थोड़ी मौका देंगे मुझे इंटरव्यू वाले. Okay, my last question. Which of the artists is associated with art movement called Cubism? Art movement called Cubism. ये थोड़ा सा. नहीं पता. Pablo. Oh, nice. Nice. It was lovely talking Thank to you you. so much. Thank you so Same much here. for your time and patience. Thank you. Thank you. And same to you. Thank you so much. Thank you.